कि what is this thing? ये जो चीज है, okay, any idea what's the functional group called? Ester. ठीक है, so this is an ester. तो वो किस के साथ ester react करता है? It reacts with sulfuric acid and NaOH क्योंकि esters they break down with both of them. ठीक है, इनका हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, इनका हाइड्रोलिसिस होता है और दे ब्रेक डाउन ड्यूरिंग दैट हाइड्रोलिसिस. एक साइड वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है and the other side turns into an alcohol. और ये alkaline hydrolysis और acidic hydrolysis दोनों होता है. बस alkaline hydrolysis में the only thing is कि the alkali would end up reacting with, if the alkali is NaOH, so it would end up reacting with the acid instead turning it into a salt. Sodium का कोई reaction नहीं होता, ठीक है, esters के साथ, so that is not going to be correct. Sodium metal जो है वो उसका कोई reaction नहीं है. As a next one, you've got this thing, और उसने कहा कि several steps are involved in the synthesis of 2-hydroxypropanoic acid. This thing. तो पहले तो वैसे डिस्कस कर लेते हैं कि you've got an alcohol. ठीक है, just 1 second. So this one, you have an alcohol, और उस alcohol के अंदर what you want to turn it into is a 3-carbon atom cyanohydrin. This is known as a cyanohydrin. It's got 3 carbon atoms. आखिरी वाला जो है ना, that's double bond O and OH. Plus I think on the second carbon atom there is CHOH. तो 1, 2 and exactly 3. ठीक है, 1, 2 and 3. और बाकी सारा H है, ठीक है. So these are all your H atoms. Just be careful, CH3, CHOH, COH. So I think it's this one. तो इसको इसमें और से उसने ढेर सारे steps बनाए हुए, arrows ढेर सारे बनाए हुए. So it's not going to happen in one step. It's going to take several steps. So what is happening कि पहले वैसे बता दो कि अगर let's say ये structured में आता, how could you make this, turn this into this thing? What would be the first step? मतलब क्या क्या steps करने पड़ते हैं कि how can you increase the carbon chain length? ये पहले बता दो कि you've got 3 carbon atoms over here, you've got 2 carbon atoms. तो वो कौन सा reaction होता है जो carbon chain की length increase करता है? Anyone, any idea? Najia, any idea? क्या reaction होगा? Which increases the length of carbon chain? बाकी जगह H लगता है. नहीं, किसके साथ? एक सेकंड नहीं, मैं H के ऊपर. So this one. There's one specific reaction that increases the length of carbon chain, and that one specific reaction is कि CN आप अटैच करते हो, ठीक है. साइनाइड आयंस जो है ना वो कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज करते हैं क्योंकि जब वो आके अटैच होते हैं तो कार्बन चेन की लेंथ बढ़ जाती है. अब CN का जो रिएक्शन है दैट इज इन 2 places.
जो जहां पे आपने पढ़ा है। एक आपने पढ़ा है हैलोजेनो एल्केन्स के साथ, कि हैलोजेनो एल्केन्स के अंदर ना अगर आपके पास यू हैव लेट्स से कोई प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन है, तो देयर इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कार्बन पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है, तो न्यूक्लियोफाइल्स इन द फॉर्म ऑफ Cn-1 NaCN एथेनॉलिक, या फिर और न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं, you've got OH-1 and you've got NH3 as well। तो ये सारे आपके पास न्यूक्लियोफाइल्स हैं, बट वी आर एट द मोमेंट डिस्कसिंग जस्ट Cn, मतलब हम सिर्फ Cn-1 डिस्कस कर रहे हैं। तो Cn-1 जो है वो अटैक करता है और कार्बन जो है ना उसके इलेक्ट्रॉन्स Cl जो है वो रिपेल होके जस्ट गोज अवे। सो दिस टर्न्स इनटू दिस थिंग कि Cl की जगह ना Cn आ जाता है एंड Cl-1 गेट्स नॉक्ड आउट। तो हैलोजेनो एल्केन्स के 3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, जिसके अंदर हमेशा यही होता है, और उससे क्या होता है कार्बन चेन की लेंथ बढ़ जाती है, वो ज्यादा हो जाती है कि ऑल ऑफ अ सडन you've got a lot more carbon, एक कार्बन एक्स्ट्रा आ जाता है। ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक और रिएक्शन भी है Cn के साथ, वो मुझे कोई बता दे कि क्या है। एक सेकंड में, ये एक और जगह भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है with Cn। So what is that place? कि एक और जगह जो रिएक्शन है, एक तो ये हैलोजेनो एल्केन्स के रिएक्शन होते हैं, एंड देयर इज अनदर वन व्हिच इज ये वाला कार्बोनाइल्स के, कि अगर कोई कार्बोनाइल होगा ना उसमें कार्बन इज पॉजिटिव एंड द ऑक्सीजन ओवर हियर इज स्लाइटली नेगेटिव, तो उसमें भी क्या होता था कि Cn-1 जो है वो अपने लोन पेयर्स लेके इस कार्बन के साथ अट्रैक्ट होता है और उधर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्दर रिपेल होते हैं, और फिर एंड में जाके ना नीचे वाले कार्बन के साथ Cn दैट गेट्स बॉन्डेड टू इट, और टॉप पे ना ऑक्सीजन-1 बन जाता है, जो कि फिर बाद में ना H+ को अपने साथ जोड़ लेता है, तो OH बन जाता है। सो दैट्स अनदर रिएक्शन। और मैं साथ ही ना वो स्पाइडर चार्ट भी शो कर दूं। तो इसमें याद रखना है कि ये जो हैलोजेनो एल्केन्स है इनके 3 ये NS लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो इट्स गॉट 3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक ये NS लिखा हुआ है कि हैलोजेनो एल्केन्स, ये आपके पास ये क्लोरो एल्केन बना हुआ है, एक NH3 के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक एथेनॉल के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और एक में वो वापस अल्कोहल बन जाता है जो कि NaOH के साथ होता है। और बाकी ये HCN के साथ जो रिएक्शन होता है ये एल्डिहाइड और कीटोन्स का होता है, दोनों का होता है, ठीक है। बोथ ऑफ देम दे रिएक्ट एंड दे टर्न इट इनटू अ साइनोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। दोनों रिएक्शंस मैंने शो कर दिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैं, और एक आपके पास ये है। इसका हम खुद से ना एक पहले ना जस्ट फॉर रिविजन सेक एक हम चार्ट इसका हम बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर करके, ताकि सारा ऑर्गेनिक जो है वो रिवाइज हो जाए एक ही गो में। इसको मैं नए बोर्ड पे ही कर लूं। अच्छा, सो दिस वन कि वी हैव दिस गोइंग ऑन, हम बारी बारी ना सारे रिएक्शंस एक ही गो में ना रिवाइज कर लेते हैं। तो
you've got alkanes turning into alkenes. तो Al2O3 और SiO2 ये आपस में they are used BMS catalyst और temperature 550 होता है. Without catalyst तो ये cracking of alkanes है. ठीक है, that's the first reaction. Okay, this one is known as cracking. What happens in cracking is so this one over here is known as cracking. Or इसके अंदर smaller alkanes alkenes and H2 gas, they are formed in this reaction. तो ये आपका पहला रिएक्शन है. फिर सेकेंड है कि आपके पास इसी तरह यू ऑल्सो गेट, थोड़ा सा ठीक है, मैं एक एक करके सारे रिएक्शंस गो थ्रू कर रहा हूँ. अच्छा, एल्केन्स का एक और रिएक्शन है जो कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है. In free radical substitution, what happens is that you form halogenoalkanes. ठीक है, that's your free radical substitution. अच्छा, halogenoalkanes is free radical substitution और उसके अंदर what happens is कि आपको पूरा free radical substitution का process याद रखना है. उसको मैं बस F.R.S कर देता हूँ. उसके अंदर the reaction is with Cl2 or with Br2 और UV light चाहिए होती है. Plus you need to know the whole mechanism of this reaction. ठीक है, कि free radical substitution, that's Cl2 Br2 plus UV light, तो आपके पास halogenoalkanes आ जाते हैं. अच्छा, then you have के अच्छा then you have के halogenoalkanes can be turned back into an alkene. अच्छा, they can be turned back into an alkene अगर आप उसको वो करो, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और उसको आप NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करो और वो एथेनॉलिक हो. तो एथेनॉलिक के साथ अगर आप उसको रिएक्ट करोगे, एंड दिस इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, कि वही जो हैलोजेनोएल्केन बना ना उसमें Cl वगैरह हट जाएंगे, उधर डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा. फिर हैलोजेनोएल्केन्स के 3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं. सो व्हिच इज जिसको हम NS कर देते हैं. तो देयर 3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो इसके अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट and there are 2 types of nucleophilic substitutions. One of them is SN1, जो कि किसका होगा, that would be for the SN1 is for tertiary. और आपका जो SN2 होगा ना, that would be for primary. So you have these 2 types of reactions, which are nucleophilic substitution reactions. उनके mechanisms 2 types के हैं.
और उसके अंदर आपको एक मिलता है कि आप अगर वो करो उसके साथ रिएक्ट, OH के साथ, तो दैट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कोहल। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी हमने पढ़ा है, दैट्स गोइंग टू टर्न इट इनटू एन अल्कोहल। ठीक है, और अल्कोहल में टर्न करने के लिए ना व्हाट यू नीड NaOH aqueous. OH -1 is going to be the nucleophile. And for this, you would need NaOH aqueous and reflux. और रिमेंबर 3 होते हैं, एक पे CN के साथ होता है, CN के साथ होता है तो नाइट्राइल बनता है। तो वी कैन डू अनदर वन कि यहाँ पे ऐड कर देते हैं, कि बॉक्स ऐड कर देते हैं नाइट्राइल का। अच्छा, नाइट्राइल्स का बॉक्स ऐड कर देते हैं, नाइट्राइल्स बनते हैं। नाइट्राइल्स भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बनते हैं। वहां पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है दैट्स द CN-1 न्यूक्लियोफाइल। और उसके लिए आपको NaCN एथेनॉलिक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही जो हैलोजेनो क्लोरीन लगा होगा उसकी जगह या तो OH आयंस आ जाएंगे या फिर CN-1 आ जाएगा। और एक और है जिसमें एमाइंस बनते हैं। तो द सेम रिएक्शन को टर्न इट इनटू एन एमाइन। एमाइंस यहाँ पे लिख लेते हैं कि अच्छा, इसको बनाने के लिए देयर वुड बी 2 कंडीशंस के again it's going to be a nucleophilic substitution reaction, same mechanism SN1 SN2। और एमाइन बनाने के लिए you would need NH3 which can be ethanolic और साथ reflux होगा। or it could be, but NH3 is the nucleophile, or the other thing is it could be NH3 gas plus इसमें वो करोगे आप heat in a sealed tube under pressure। तो ये 3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो हैलोजेनो एल्केन्स के हैं। और हैलोजेनो एल्केन्स का एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, जिससे वो वापस एल्कीन बन जाता है। फिर आपको याद रखना है वो सारा कि एल्कीन्स का पता होना चाहिए कि एल्कीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हैलोजेनो एल्केन्स बैक अगेन। और उसके अंदर इस चीज को मैं उठा के ऊपर ले जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, एल्कीन्स कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू हैलोजेनो एल्केन्स, वो आसान है। वो उसमें आपको ब्रोमिनेशन वगैरह वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो अच्छा, सो तो यहाँ पे आपको या तो Br2 aqueous in CCl4 aqueous और Br2
in CCl4 solvent. ये यूज करना होता है inert solvent, and this is at RTP and absence of light. या और भी reactions होते हैं, reactions with HBr, HCl, etc. They would also lead to the same reaction के alkenes turning into so you could have alkenes turning into इसको मैं थोड़ा बस ठीक है. अच्छा, so you could also have alkenes turning into halogenoalkanes by reactions with HCl, HBr or HI. ठीक है, तो आपके पास ये सारी reactions है. अच्छा, फिर आपकी alkenes जो है ना, they can be turned into alcohols. वो एक reaction है. alkenes को alcohol में किस तरह turn करते हैं? You turn them by reacting with water. और दो तरीकों से करते हैं. एक तो water के साथ steam होता है, basically gas, और temperature 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, and the pressure is 60 atmospheres, and you need a catalyst which is phosphoric acid. This reaction is known as hydration. बस जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा ना, वो वापस alkenes में convert हो जाएगा. And another reaction is कि an alkene could be converted into an alcohol by अच्छा, so there's another reaction, and that's when you have mild oxidation. Mild oxidation करोगे ना, तो जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा वहां पे जाके ये cold dilute alkaline KMnO4 and remember this is diols are formed कि जहां पे भी आपको ना वो नजर आएगा, डबल बॉन्ड नजर आएगा, उन जगहों पे OH ऐड हो जाएंगे. ठीक है, सो दैट्स वन थिंग. अच्छा, और क्या कि अल्कोहल से वापस आप एल्कीन बना लेते हो अगर डिहाइड्रेशन करते हो. कि अगर आप अल्कोहल से स्टार्ट हो ना, और तो you can kind of come back to अच्छा you can kind of come back to an alkene अगर आप डिहाइड्रेशन करो. डिहाइड्रेशन दो तीन तरीकों से होती है. वन इज के इट्स Al2O3 प्लस हीट, तो वो जो OH है ना, वो हट जाता है और डबल बॉन्ड वापस आ जाता है. एंड द अदर वन इज और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसके थ्रू आप उसे बबल करो. ठीक है, सो दिस इज योर डिहाइड्रेशन. वो पहला वाला रिएक्शन हाइड्रेशन था. दिस वन इज योर डिहाइड्रेशन रिएक्शन. तो अच्छा, एल्कीन्स के रिएक्शन याद रखना कि ये वाले जो रिएक्शन है ना, हाइड्रेशन वगैरह, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. ठीक है, एल्कीन्स के जितने भी रिएक्शंस है ये HI वगैरह के साथ, तो उनके मैकेनिज्म भी पता होने चाहिए. ब्रोमीन के साथ ब्रोमिनेशन इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. तो ये आपके पास वो सारे रिएक्शंस आ गए. अच्छा, बाकी कर लेते हैं कि एल्कीन्स की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होती है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के अंदर दो तीन सिनेरियोज होते हैं. तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन वाले तीनों सिनेरियोज एक बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं, जिसको हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन. अच्छा, सो alkenes can undergo strong oxidation. Now, for strong oxidation, you would need hot concentrated KMnO4. तो उसके लिए what you need is
you need hot concentrated or acidified B. So there's going to be H+1 as well. So it's going to be a hot concentrated KMnO4. That would lead to strong oxidation, and that would lead to three things. One of which is going to be कि अगर तो double bond. First thing is double bond would break completely. ठीक है, that breaks completely. And you've got three scenarios. One is कि double bond वाला जो carbon है, that's bonded to carbon chains on both sides. The other scenario is double bonded carbon atom is bonded to a carbon chain on just one side. And then you've got a third scenario where the double bonded carbon atom is bonded to it's bonded to no carbon chains at all. So scenario number 1, 2, and 3. That's a scenario. This is scenario number 1. As I here you have scenario number 2. और फिर यहाँ पे ना this is scenario number 3. तो 3 different scenarios हैं. और उसमें है कि ये वाला जो है this turns into a ketone. ये वाला scenario है कि it turns into a carboxylic acid. और आखिरी scenario है कि it turns into carbon dioxide and H2O. So you'll have these three scenarios. कि double bond टूटेगा strong oxidation में, and this is what's going to happen. अच्छा, so that's up till alkenes. कि उनकी strong oxidation है. Then you've got के alkenes से और क्या बनता है कि let's move to alcohols first. Alcohols जो है उनसे आप बना लेते हो aldehyde और उनसे आप बना लेते हो carboxylic acids. So let me just increase the अच्छा alcohols की oxidation. So a couple of you can turn this into an aldehyde. Or the second thing is you can also turn it into a carboxylic acid. तो ये दोनों चीजें आपको मिल सकती हैं इसमें. अच्छा, for an aldehyde, if you want to turn it into an aldehyde, that's oxidation. So it's an oxidation reaction. यहाँ से इधर जोड़ दिया, ठीक है. And this is K2Cr2O7. It's going to be acidified and you reflux. And KMnO4 can also be used, but not recommended. So this one is or KMnO4. तो आप किसी भी अल्कोहल को ऑक्साइड करोगे ना, it will turn into an aldehyde and it will also further get turned into a carboxylic acid. तो वही aldehyde जो है ना, वो carboxylic acid भी बन जाएगा.
सेम चीज है, एक्सेप्ट कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में टर्न करने के लिए ना, दे आर द reagents as well. तो one of them is K2Cr2O7. That is number one. Okay, it's going to be K2Cr2O7 acidified, and it's going to be reflux or KMNO4, ठीक है, but not recommended. The other two are, you could have filling, reagent plus heat, or number three is you could have Tollens reagent as well, जो कि filling के अंदर copper 2+ ions होते हैं, और Tollens has this particular thing. और पूरे के ऊपर जो चार्ज होगा ना, that would be +1. So that is also oxidation, ठीक है. तो alcohol can be turned into aldehydes and then turned into carboxylic acid. उसमें ये कि to stop at aldehydes use distill, ठीक है. तो ये एक याद रखना कि to stop at aldehydes ताकि further oxidation ना हो. तो use distillation, ठीक है, not reflux, ये याद रखना है. और फिर दूसरा है कि रिवर्स भी पॉसिबल है. रिवर्स में ये कि सब कुछ रिवर्स हो जाएगा कि एल्डिहाइड से ना वापस आपको अल्कोहल मिल जाएगा. सो दैट इज योर रिडक्शन रिएक्शन. उसमें है कि आपके यू कैन यूज NaBH4 or you could use LiAlH4 as the reagent. और आखिरी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी ना वापस कन्वर्ट हो जाता है उसमें वापस. अच्छा, it turns back. अच्छा, it also turns back into this thing. इसको ये खाली LiAlH4 के साथ होता है. अच्छा, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है. इसमें अब कीटोन्स मिसिंग है, वो हम बीच में ऐड कर देंगे. तुम्हारा चार्ट पे काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा. थोड़ी सी चीजें रहेगी. इन सारे रिएक्शंस को ना बारी बारी रिवाइज करना है. मैकेनिज्म्स को याद रखना है, किसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज क्या बनती है, ठीक है. वो याद रखना है. मैं शेयर कर रहा हूँ बोर्ड का लिंक भी. अच्छा, मेक श्योर नेक्स्ट वीक पहली चीज हम करेंगे ऑर्गेनिक का टेस्ट होगा, ठीक है. मेक श्योर यू रिवाइज दिस. ऑर्गेनिक का काफी बड़ा टेस्ट होगा ये. इसके लिए प्रिपेयर करो कि हर चीज पता हो ऑर्गेनिक की, ठीक है. तो मंडे को याद रखना कि देयर इज गोइंग टू बी अ टेस्ट. चलिए ठीक है, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम देन. तो इस चीज की ना रिवीजन स्टार्ट करो ऑर्गेनिक की. चलिए, ओके एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़ सर.